Hello everyone, once again welcome to MediSnaps. I know एपिसोड 2 लाने में थोड़ा सा लेट हुआ, बट आई डोंट वांट टू गिव यू एनी नॉट वर्थ कंटेंट. एंड मैंने काफ़ी स्टोरीज़ खोजी तो मुझे ये एक स्टोरी मिली जो कि बहुत ही मोटिवेशनल है, बहुत ही इंस्पिरेशनल है और हर मेडिकल एंटरप्रेन्योर के लिए एक बहुत अच्छी सीख है. एंड ये जो एक स्टोरी है जिन सर के बारे में, एक बाउंसिंग बैक टेक्निक, बल्कि बाउंसिंग बैक जो हम लोग कहते हैं कि कैसे आप अपने लोज से कैसे अपने हाइज़ को आएँ, उस इस स्टोरी के थ्रू आप जानेंगे. एंड डेफिनेटली आवर गेस्ट इज़ अ रियली मोटिवेशनल पर्सन. ही इज़ अ CEO of DBMCI and I know you will like it. And he is Dr. Nachiket Bhatia, the man behind eGurukul app. So उनकी स्टोरी हम जानेंगे एंड हम उससे एक बहुत अच्छी चीज़ सीखे लेंगे. हम लोग जानेंगे जो आपके डिलेमा है नीट PG 2021 के लिए, उसके लिए आप कैसे उसको सॉल्व करें, कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करें. जो नेक्स्ट दे रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी चीज़ें हम लोग जानेंगे एंड एक उनकी लाइफ का इंसाइट जानेंगे. एंड एज आई से ऑलवेज कि आई ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग सम पॉजिटिविटी इन यू पीपल्स लाइफ. एंड दिस is Motivational Medico, the podcast, and this is MediSnaps, completing healthcare. Sir, it's an honor to have you in the show. ठीक है ना, वो गोइंग प्रीटी बैड, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया था और संभालने के लिए संभल नहीं रहा था. सो आई यूज्ड टू माय कॉलेज वाज इन मेरठ, सो आई यूज्ड टू ड्राइव इन द मॉर्निंग एंड कम बैक इन द इवनिंग आफ्टर 4 o'clock सो दैट आई कुड सिट इन द मीटिंग्स एंड जस्ट ऑब्जर्व एंड सिट इन द ऑफिस. जब तक वो ग्रो हो रहा था बिजनेस, दैट 4 people वर डूइंग वेल, बट वो जब गिरना शुरू हुआ दैट 4 people could not understand why it was going down. When I was going through the low time, my elder brother told me that if you want to create something, if you want to change something, you have to create something. Because the medical Facebook idea I had around 2 years back, 2 to 3 years back. So basically, I was not able to implement that idea. So it took me, and Gurukul again is, after 2 failed attempts, Gurukul has been launched. Failed 20 again. It took I in 20. But what was your? There's a thing called AD to BC moment, calendar change moment in everyone's life, sir. So what was your AD to BC moment that you took it to the another level for eGurukul? And you 2019 middle, I started working for 20th. Okay, Gurukul 1.0, and then 1.0 was launched, and I wanted to create an ecosystem where the student doesn't need to go outside. So Gurukul itself is a name, is the idea behind the whole name. That when you enter it, you are now cut off from the whole social media and everything, and now whatever you need to actually prepare, it is there in that app. I said, if I am right now, I am earning, I am able to stand on my feet, so why not help others? आज नहीं तो कल, बल्कि ज़रूरत होती है, ठीक है ना. ये it is not something that they are playing on. It is that they are actually telling you their emotions, their need, and it is that God has given me something in the last 2 years, so why not help others? आज नहीं तो कल उनकी दुआएं भी लगेंगी, उनकी blessings भी लगेंगी. Yashish, when I talk about Dr. Thameem, Dr. Rajat, I mean, if you see statistically, I think they are actually the owners of Bhatia because they have been with us since the start. They actually are the owners of Bhatia because they have built us from the scratch. So without Dr. Thameem or Dr. Rajat or the other renowned faculties, I don't think Bhatia is anything. The faculties are Bhatia, the people are Bhatia. Sir, recently you have been ranked amongst the top 10 CEOs, the most innovative CEOs by the Forbes. And yesterday only I read an article in Business Today about you in the top, among the top most prestigious CEOs. So sir, how is the feeling right now? I mean, I am still amazed, and मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है कि मैं क्या कहूँ, because it is still an unknown feeling to me that something like that is happening.